Okay, welcome to this training session of Park Angels. And so, Alhamdulillah, we have about 26 people and more people are joining. I think we need to get started. The purpose of today's session is twofold. What are the typical key requirements investor they look at into startup, early stage startup, before they're going to be interested in? And number two, focus would be how to put together a good PowerPoint presentation that makes it a lot easier for investor to understand what your company is all about. I think that's a very important aspect of communication. So our thoughts, and as we go into that phase of Park Angels process, would be good to hear from Naeem Zafar on that aspect as well. He's been, I've seen his and some of his training session and very articulate in terms of what needs to be done. So the guys who have joined and joining, I think you're going to find it very, very productive. That's the whole purpose is for Park Angels is not only to get invested, but also to learn together. So I'm going to share some of my slides first. Can you see my screen? Not yet. All right. Yeah. Perfect. So again, I think it's important to mention what is Park Angels all about to set the expectation right. As you have on the journey with Park Angels, there are threefold purposes that Park Angels has. One is to really get these early stage startups invested through our platform. Again, Park Angel is a facilitation platform. We bring startups together on one side, and then we bring the investors on the other side. And we try to help the startups to make sure that they are able to present right information and pitch right way to the investors on one part. We also make sure that what the startups they had presented are more investor ready, rather than they are very initial stage where investors, they may not be ready to invest in them. But however, we communicate with the startups what is expected, and through this journey that they would learn. And even if they don't qualify this time to get invested, that they should be able to learn what needs to be done the next time and what other progresses they need to make to get investment ready. So that's very important. It's a journey together. That's what we want to accomplish. At the same time, we want to provide through this platform access to the advisors, especially the foreign advisors who have learned over many, many years of how to do business at the global standard level, and as well as very good local advisors. There is a number of them. So be able to provide an access to them and be able to sign up as you find them relevant, or they find relevant with your, or they're passionate about what you're doing. Number three area of focus is to how we can connect early stage startups to the businesses as well. This is one thing which we found very interesting. We had 3 different sessions in Karachi. Park Angels and Aspire Pakistan had 3 different sessions, different events in Karachi, where we brought businesses together along with the startups in this under the same roof. Maybe some of the startups who participated in that those events in Karachi, maybe on the call. But that was very good experience because we saw businesses were very excited when they saw what these startups have been doing. They were not exposed to. And same way, the startups were able to find guidance and advice and potential customer in future for their business
and potential investor as well as a strategic investor as well. So we saw that was really resonated well, and we are consciously working in that direction as well. We are not fully ready yet, but we're hoping that early part of 2024, that we will have that all process streamlined. But until then, we will have some spotty successes that we will bring in some startups, and as we do events in Lahore and Islamabad as well, and Karachi in the coming months. But at the end of the day, really the whole purpose of Park Angels is to make this journey successful for you, because this is what our purpose is. Why Naeem Zafar or Rafiq is on the call, and I and Hassan Sayyed from Swire Pakistan, we have been spending our time is really to build a startup culture in Pakistan, help to develop this sporting ecosystem, and within there, this early stage of journey that you guys have is so vulnerable and so important, so critical. So that's why we said that we decided to focus on this area of the startup, which is early stage. So with that said, again, let's look at it. I think it's important what a startup is and how is that different from small to mid-sized business, which is so important. Some of the people who applied into Park Angels, they were more qualified as a small or medium-sized business, what they were trying to do. So I thought it was important to mention here that startup is unique in a manner they look for exponential growth. Exponential growth that driven through their product or service, where the growth of revenue does not go along with the hiring of people. It has to be exponential. So in a small business, typically when you grow, and as a consulting business, as you grow your revenue, as your business, you have to hire more people. That's not the case in a startup. You do a great innovative products, and that innovative product with the team does grow a bit, but not proportionally to the revenue growth. And that's what the very key difference of this startup. Second one is it goes into new markets, it goes into disruptive environment, it takes much higher risk. And again, objective is you go after a much larger base of market and build a large business, not only to address your country in Pakistan, but also beyond that thing as well. So I think that's the way these new products, new innovative products could be applicable as well. So you have to look at that way. And many of you, most of you are in that category, as some of you guys who were not qualified in the selected list of 60. I think we saw that. I think some of them, not all of them, they were more qualified as a small or medium-sized business they were going after. With that said, let's look at the key requirements for angel investment. I'm going to run through fast so that I really want Naeem to cover his area, which is very, very important. But it's really important to get in sync that, in a startup environment, it's really important that the founders, they are very passionate. They have a clear vision of the future they want to see, they want to make it, and then build a strong team around them. This is the most important thing an investor look into, how strong a team is, how strong the founders are, how passionate they are, and how clear vision they have about what they are about to make happen. So that's I think the key. You have to continue to build your team, have a very clear vision. Clarity is very, very important in what you want to implement, what you want to drive. Number two, it's always important to go after large size markets. And again, it's the same amount of work you guys are going to do. Whether you achieve a much smaller objective, smaller market, smaller revenue end goal in 5 years or 10 years, versus you make it 100 times of that revenue. But that's what you want to go after. That's when you are going after a sizable market, but then you also have to look at it, how to reach that sizable, huge size market. That your solution, your service, your product has to be scalable.
It has to be designed to be easily adoptable by your intended customers. It has to be designed to easily scale in terms of if it's a SaaS service, be able to drive that thing. Is it if any of the customers, they should be able to adopt it, whether it's a price point, all of the various different factors of scalability that has to be looked into. And then equally, you have to make money on the way rather than have a model that where you lose the money, which I will cover that thing later on as well. So that's very, very important. I always say that you're going to do the same amount of work, it's better to go after larger size market rather than smaller size market. But however, you cannot boil the ocean from day one. You define your roadmap, how to become big over time. For example, Amazon, they started with the books only. And now today they sell so many different things, but they stayed focused on books, made it very successful. And then they use that their platform and their capability, their access to the consumer to expand to other products as well. Just an example. You have to have a unique value proposition and competitive advantage. If you're doing something that is already being done by so many others, you have to have something really unique that's going to make you successful, because at the end of the day, for any market, target market, there are only three maximum, but one or two players, they survive. All other, they get disappear over time. So there's a number one and number two, and number three is underdog. Okay, so you better be in an environment, in a business you are focusing on where you are very unique and you have a competitive advantage, and some competitive advantage that you can protect over time. Whether you are first to market, you are on a good momentum, whether you have a patent that you have applied, unique way you have implemented, all of various different things, you have to look at it. So these three important things you have to keep with them: strong team, great vision, very large size market you're going after, and unique value proposition. Then you get to the next level of things, where you have to develop a MVP, minimum viable product, to test the market and to fine tune your concept and to make sure that this is what is going to achieve what your vision has been. You have to get a market validation to try that product out and catch the customer feedback and have a customer sign up. Even if your product is not ready yet, to have few customers sign up and work with you during the product development is the best way to develop a successful product. This is very hard to develop a product sitting in a corner. It's very important to understand what the market needs are, what customer needs are as you're developing. So it's always good to have that, to have some customers. That's why one of the, for many startups, it's a B2B and is an important part of their business, whether it's B2BC or B2B only. That's why we want to provide access to businesses as well. So they can work with you right up front to help you to make sure the products that you're developing are the product that they need. And that's very important. And number two is once they test that product, they agree with that and they like it and they want to adopt it. They want to make it available to all of their customer base. All of those things are the market validation that you have to achieve. And then clear financial plan and potential returns. That's the place where the profitability comes into the play. That you have to have a proper unit economics in terms of how you're making money from your product or service. This is the area where some of our recent big startups, they didn't do good and they closed their shop. I think that's very important. See, that you many times the large investor, they will push you to spend money. This is not something you will need to worry about right now, but sometime in future. But you have to know what your business is. The bottom lines of your business, the key factor, the key metrics that you have to keep in line and make sure that you, as you grow, you have a full understanding about your customer retention, your customer, cost of customer acquisition, the margins, all the cost factors, not just the product margin, but the whole operations margin has to be looked at it. And unit economics, and for every dollar or every rupees that you're making, how is going to make you money. So that's very, very important that you need to understand. Then obviously revenue projection and over time. In the early stage, it's hard to have a revenue projection, but however, at least have a first pass of what you believe is achievable.
And then obviously you refine over time as you develop your journey. Then this is a large chart in terms of you have to, when you go into investment phase of your even early stage investors like angel investors, investors, and they get interested on multiple reasons. I'm not going to go through each the whole long list, but one of the things that many investors not only they are interested to make money, but they get resonated with the passion they have as well. They like something that they would like to see in your company that will grow what they are passionate about. That's number one. Number two is investors also have, especially the European or American or foreign investors, they are very specific about the integrity, business practices, trust. So these are the things that you guys have to really, if you really want to succeed, any of these startups that are on the call or others on this journey, you have to make sure that you go with ethical business practices. You have integrity in your dealing, in your thinking, and in your implementations, and you build the trust over time. I think if you build the trust over time, even things tough time they come in, sometimes they do in a startup journey, that the investor will stay with you. But if they don't trust, then they may walk away. So I think these are the very key aspect of building. Not only that thing is will help you, but also as you go take your service products beyond Pakistan, those are very, very critical factors to succeed and grow and well respected by your customers and the partners and everything else. Another aspect of it, that your team, you should be open to take advice. You should be open to take guidance. That's has to get into your culture, into your mindset. Why? You're all young people. And even somebody, not young people like me or even Naeem Zafar, and we always seek out advisors who can help into this new vertical that we are going after, who are the good people who understand that vertical or that business, or in marketing or in sales or in sales strategy or in every aspect of function. I think you got to recognize is what the weaknesses are, where you need to learn. It's better to take the advice. And that's why we want to provide this through this Spark Angels platform vehicle to sign up advisors in any of those areas where you feel. So think of it like you have to look at it like a puzzle and need to recognize where you are good at, where you are not good at. And it's important to recognize where you're not good at is to fill in through advisors, through key employees in that area with that experience they can bring it onto your team over time. And the last aspect of is you have to be legally compliant. Pakistan has very clear guidance, legal guidance by CCP. And so you have to make sure that we'll continue to guide you and put you in that aspect of it. You have to stay open into that. Because legal and compliance aspect of things. And some of these startup who have a medical products, they have to go through the industry compliance as well of their product. They have to plan in, because sometimes it takes time before you could even make revenue. So I think those are the very important aspect of it. And some of people who applied and they are selected as well, they have such type of medical products as well. So with that, I'm going to stop here and I'm going to open up for any question that might be around this area. Otherwise, I would like to go to Naeem Zafar. Rafiq, are you seeing any question on the chat? Rafiq, you are on mute. Naeem, are you seeing any chat? Let me come out of the mode. Not chat, but Zahir has his hand up. Okay, Zahir, go ahead. Please ask the question. Assalamualaikum, sir. Walaikum salam. Sir, I just want to ask about
and regulatory compliances. आवाज अच्छी नहीं आ रही यार, आइसक्रीम कराओ। आपकी आवाज कट रही है। Come close to the microphone. Hello, sir, मेरी आवाज आ रही है sir? हाँ जी, अब आ रही है। अब Sir, I सही है। just want to know about the legal and regulatory compliance. Kindly explain it. I mean, I didn't get about it. नहीं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप की जो स्टार्टअप रजिस्टर्ड होनी चाहिए SECP के साथ, सही है ना। तो वो सबसे इस वक्त तो सबसे ज्यादा ये जरूरी है। बाकी जो हर एक की अपनी अपनी फ्लेवर होगा कि क्या कंप्लायंस के इश्यूज हैं वगैरह और क्या कंप्लायंस करनी चाहिए। तो वो हम ऑफलाइन ले जाते हैं और उसके हिसाब से जो है वो कैटेगरीज को डिफाइन करके जो है वो कवर दैट थिंग। we'll have a session on legal as well, legal training as well. Okay, so next question, Sufi sir. सूफी जलाल। जी, अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बहुत जबरदस्त सेशन था सर। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे जब हम किसी भी सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में हम जब कॉल करेंगे या नहीं कर पाएंगे, तो क्या कोई लेटर ऑफ एप्रिसिएशन मिल सकेगा हमें एंजल इन्वेस्टमेंट फोरम से कि भी हम इस स्टेज तक पहुंचे थे, सेकंड स्टेज तक, थर्ड स्टेज तक या फोर्थ स्टेज तक? डज देयर एनी एक्रीडेशन के कोई हमें एक्रीडेट हो सकेगा कि हम इस जर्नी में पार्ट रहे थे, इस स्टेज तक रहे थे? बिल्कुल। दो चीजें, आई गॉट योर क्वेश्चन। सो दो चीजें, एक तो ये कि यस वी कैन explore that thing and we'll take that request in-house to see how we can initiate that letter of appreciation and to participate and be able to get to that level. Number one. Number two is very important that even though you may not go selected for the next phase, but you will stay with our platform and will continue to learn because we want to make sure you get invested next time. So this is very, very important as well. So we will take your request and then come back with the mechanism to do that thing. One last question I want to take before I pass on to Naeem. Yeah, that's Samad Khan. Okay, please. Hi, assalamu alaikum, guys. Walaikum salam. Guys, after looking the economical situation of Pakistan, what do you think? What's the environment or the sentiment of angel investors currently investing in Pakistan, especially if the startup is on the idea stage? Because we can understand VCs have a very different sentiments nowadays. I'm not too sure about the angel investors. से अच्छा, ये मैं सिर्फ कहूंगा या नहीं भी इसको जवाब दे सकते हैं. What we see here typically when the environments are really economically bad are the best time when the startups are pop up and they succeed. Love to hear that. But yes. VCs have a very different point of view. No. I think those VCs आप बात कर रहे हैं वो later stage के बारे में बात करें जब वो growth के बारे से आ रहा है. इस वक्त आइडियाज के शुरू में जब आइडियाज है उसको लेकर आना और उसमें यूनिकनेस होनी चाहिए, आपके डिफरेंशिएशन होनी चाहिए और नई चीज होनी चाहिए. ये चीजें जो है ना, ये जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं दे आर मोर हायर रिस्क टेकर्स because they are investing in early stage startup. It's a much higher risk effort than other ones, but then they also look for the basic things which I just went through in those 2-3 charts. What's the team, what's the idea, what the target market, all of those things, and they hope that thing when things they start coming, because this recession or bad economic situation, they don't last for more than 3-4 years or 2-3 years is the maximum sometimes. So that's why I think you will see that thing that should be able to, people they get early stage startup be able to get invested. For example, one of my startup, VivaTech, in 2001 was a very low. So many, there were not many startups who got invested, but I was able to receive $5 million from an investor because I was going after a market of mobile, and investor believed that was going to do huge, and so they invested. So yes, and I don't want to take too much time, but however, inshallah ta'ala, there's a good hope if your idea is good. Okay, with that said, so I have a small request as well. Let's take it offline. Let's take it offline, please. Okay. And you can share in that group, WhatsApp group. Okay, thanks. With that, Naeem, I pass it on to you. So you can share the screen. Let me stop sharing. Hold on.
चलें so again Anwar, very kind of you to invite me. मेरा नाम नईम जफर है, तो मैं लाहौर से हूँ, लेकिन अमेरिका में आया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए. तो यहाँ I've done 7 startups, 5 times CEO, multiple exits, and now I've been teaching entrepreneurship at University of California, Berkeley for 17 साल से. So anything about raising money, starting companies, I can answer any questions you have. I would like to hear a little bit better what आप लोगों ने समझना क्या है, क्या चीज आपके ज़हन में है, which will be important to know because I have thousands of slides. I'm going to share something with you, but more can be more clear if I know what is most useful. क्योंकि हम अमेरिका में बैठे हुए हैं, अमेरिका की नजर से आपको बात करते हैं. तो मैंने I've written many books. These books could be useful अगर आपने कोई that can help you answer many questions. So that could be something relevant as well. यार ज़हीर अपना हाथ नीचे कर ले यार. So this is the books now. Just for attending here and on the request of Anwar, I'm going to give you one book for free, and it is this. Mashallah. So this is a simple book. It's only 40 pages, very simple to understand, but gives you the basic concept. एक company start कैसे करते हैं. तो आप जाएं अगर naimzafar.com/free आप डाउनलोड कर सकते हैं. मजे की बात है. Please say again, sir. Please, जनाब. Slide to देखो. Everything is written down on the slide. naimzafar.com/free. ये मेरा नाम तो आपको समझ नहीं, अगर नाम भी याद नहीं है फिर क्या फायदा है. नहीं, नाम तो नईम जफर याद है बहुत अच्छी तरह से. उसके बाद फ्री अजहर आप इस स्लाइड को देख लें, उसको कैप्चर कर लें, वरना तो इसको डाल देंगे हम इसके व्हाट्सएप ग्रुप पे. प्लीज लेट इट कंटिन्यू. लफ्ज मुफ्त आपको याद है ना? मुफ्त तो हर पाकिस्तानी को याद है. इसमें मुश्किल क्या बात है? naimzafar.com/free. It's the easiest URL ever. You don't even have to write it down. Anwar, मजे की बात यह है कि I've offered made this offer several hundred times. You'll be surprised after the 100 people how many download the book. What will be your guess, Mohammed? Is that it? Maybe 20. Answer is 2. 2 out of 100. Yeah, and many times it's 0. But it's unbelievable. If people don't even have any motivation to इतना टांग हिलाने का, तो कंपनी क्या चलाएंगे यार? सही बात. काम है देना, उनका काम है देना. सही बात. जगह ये है कंपनी स्टार्ट करने के लिए there are 2 phases. पहला फेज है कि जैसे बचपन में खेलते थे कि अगर मैं पानी में डालूंगा पानी में डूबेगा या आगे तैरेगा. ऐसे ही छोटी हम हमारे पास तो आईपैड नहीं होता था, हम ये इस तरह के गेम्स खेलते थे जब हम 5 साल के होते थे. This is the same thing. You have to determine कि आइडिया ये तैरेगा या डूबेगा. अगर वो तैरने वाला क्या कंफर्म हो जाएगा तो फिर इसमें your investment worthy. It doesn't mean your investment ready. The other question you have to answer to is it investment worthy. लोग उसमें पैसे डालने. Sorry नहीं मतलब हम इंटरप्ट यू. ये कौन बताएगा कि ये तैरेगा या डूबेगा? अजहर साहब, आप questions are not allowed during this session. At the end you can ask the question. We don't have too much time really. Thank you. And the answer to your question is I will tell you in the next slide. So that's the question. That's how the presentation normally go. पहले शुरू करते हैं कहानी से, फिर ऐसा अनवेल करते हैं कहानी को. तो ये जो कह रहा है कि मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आप इसको कैप्चर तो करो ना कॉन्सेप्ट को पहले, क्योंकि बच्चे होता है कि आप you have some idea half baked और आप नाराज हो जाते हैं कि मुझे पैसे नहीं दे रहे लोग. ये उस्ताद टेस्ट तो कर अपने आप को, ये कायल भी है कि नहीं. मोस्ट आइडियाज कायल नहीं होते, फिर क्यों आपको कोई पैसे देगा. तो ये इसको करने के लिए टेस्ट करने के आपके 5 सवाल करने हैं आपने. वो बताएंगे कि आप इन्वेस्टमेंट वर्दी हैं कि नहीं है. उसके बाद उसके अगर जवाब हाँ और हाँ में आ गया आपके जहन में, फिर आप 5 मजीद सवाल पूछेंगे कि इन्वेस्टमेंट में कोई तैयार भी हूं कि नहीं हूं. अब आप सोचेंगे जी क्या 5 सवाल हैं. मैं आपको बता दूंगा ये 5 सवाल हैं. हालांकि ये मैंने स्लाइड बनाई जब मन पर बात करते थे. मैंने जस्ट मेड दिस स्लाइड नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम. तो पहली बात यह है कि इज इट रियली ए अनमेट नीड. आपके ज़हन में तो बड़ा अफलातूनी सा जवाब आ गया, भी ये करते हैं ऐसे करेंगे फिर ऐसे होगा. यार जाके कोई 50 लोगों से बात तो करो, उनको जरूरत भी है कि नहीं. पता चला कि जरूरत ही नहीं है.
वो कहे जी मैं ऐसी वो छुरी बनाऊंगा, वो छुरी इतनी तेज होगी उसको वो जूते को भी काट सकती है। यार को 50 लोगों से बात करो, जूते काटने की छुरी को किसी को जरूरत भी है कि नहीं है? अगर काट भी दे तो फिर क्या बड़ी, क्या मार का मार दिया आपने। नंबर 2, इज देयर अ बिग मार्केट? कितने लोगों की जरूरत है? 1000, 500, 1 लाख, 1 करोड़, आई डोंट नो। तो ये सवाल आपको करना पड़ेगा अपने आप से, कुछ करना पड़ेगा। नंबर 3 है कि इसके मेरे जो लोग हैं जिनको जरूरत है उनका ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या कर सकते हैं उनके पास? और छुरियां हैं, चाकू हैं, जरूरत है। So you want to find an area when competition is not so strong or you can enter easily. And who needs you more? Which is called which segment is underserved. So every segment में there's some people उनको which is underserved. So this is the point is for you to find underserved segment. अगर ये market इतनी है, ये इन लोगों के all solution है, इन लोगों को जरूरत है, इनके पास पैसे नहीं है, नो पैसा। आप इस सेगमेंट पे यहाँ जो दुकानदार हैं जिनका कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा का है सालाना रेवेन्यू, दे नीड दिस न्यू सोल्यूशन। दीज पीपल ऑलरेडी हैव अ सोल्यूशन, इनके पास तो पैसे नहीं है। तो आइडेंटिफाइंग हु नीड्स मी मोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इज दिस सेगमेंट अंडरसर्व्ड? कि उनको कोई लिफ्ट ही नहीं कराता था जी। अच्छा ठीक है। फिर नंबर 5 कि आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या, इनके लिए क्या फायदा है, क्यों उठाना चाहते हैं? तो ये आपको अगर 5 सवाल, अच्छा ये 5 सवाल का जवाब देने के लिए you don't even have to quit your dead job. ये तो साइड में वीकेंड पे रात को मिलजुल के अपने को-फाउंडर के साथ आप इन 5 सवालों का जवाब दे सकते हैं। अगर इनका सबका जवाब अच्छा आ गया, फिर आप मोर कन्विंस हो गए भाई वाकई इसकी जरूरत है। अब नाउ यू रेडी फॉर द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। These 5 questions tell you कि are you investment ready? आपका बिजनेस मॉडल कैसा है, क्या बेचोगे, कितने का बेचोगे, कैसे बेचोगे, ऑनलाइन है, करियाने की दुकान पे बिकेगा, ये अपनी डायरेक्ट सेल होगा, ऑन ए पर यूनिट बेसिस पैसे बनते हैं कि नहीं? अगर आप एक चीज बेचते हो, आपको बंदा इतने जैसे $100 देता है, आपकी कॉस्ट उसको बनाने की है $20, आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वो है आपकी $40। तो देखें 100 आएंगे, 40 मान जाएंगे, 20 आएंगे, तो मेरा ग्रोस प्रॉफिट जो होगा इसमें वो हो जाएगा 100 माइनस 20 माइनस 10 $40 का। अच्छा ये सही है। इसमें सब कंपनियां मैं निकाल के ऑपरेशन निकाल के मेरा नेट प्रॉफिट $10-15 का हो जाएगा। इस तरह की एक तस्वीर बनानी है अपने आप को। इसमें पैसे हैं कितने हैं, उसका यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होगा, इस तरह की मजीद डिटेल हो सकती है इसकी, लेकिन दिस इज आइडिया यू हैव टू फिगर आउट। देन यूनिट, देन फाइनेंशियल, कितनी बड़ी कंपनी हो सकती है 2 साल के बाद, 5 साल के बाद। Then what do you need from investor and how does it de-risk the company? मतलब ये है कि ये 10 सवाल जो है ना आपके, ये 10 सवाल बन जाते हैं 10 स्लाइड्स या 15 स्लाइड। ये 10 सवाल हैं, that becomes your business plan in your head। ये 10 सवाल अगर आप जवाब फटाफट देने को तैयार हैं तो you become investment ready। अब ये होता है कि पाकिस्तान पे पूछो कि आप क्या करते हैं, वो लंबी कहानी सुनाते हैं कोई अजीब सी। जी मैं तो बचपन से मैं बहुत होशियार था, फिर मैंने मैट्रिक पे किया, वहां से मेरे 4 दोस्तों को मिलकर हमने ही कर लिया, हम 2 साल से काम करें। यार बता तो सही प्रॉब्लम क्या है, क्या वैल्यू प्रोपोजिशन है, किसको जरूरत है, उसकी बात कर, अपनी जिंदगी की कहानी क्यों सुना रहे हो मुझे? तो ये चक्कर होता है। Of course I have a lot more slides to give you, but since only one person has the camera on, Imran Abdul Ghani साहब, have you done any of this, some of this, all of this? कोई मुझे जवाब दें इसका। जी सर, इसमें मैंने काफी सारी चीजें की हुई हैं। क्या कोई कहानी सुनाए, क्लैरिटी आई, फायदा हुआ, नहीं किया क्या हमसे नहीं की? डेफिनेट सर, इसके बगैर तो जैसे जस्ट इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ यूनिट इकोनॉमिक्स, अगर आप डेफिनेटली एक यूनिट लेवल पे भी जो है क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी, तो फिर डेफिनेटली मैसिव लेवल पे तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द यूनिट इकोनॉमिक्स, योर कैक एंड अदर थिंग्स एज वेल। So definitely, and along with that, definitely you will have to have a detailed go-to-market plan.
कि अपनी प्रोडक्ट है जैसी भी है, इस फिजिकल डिजिटल, उसको किस तरह से आप लेके चलेंगे. सो ऑल दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, so basically what you're trying to do, your business plan, before you talk to investor, you have to answer these 4 questions. Who needs you more? या ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये करते हैं, लेकिन ये जो है ना लोग, खवातीन सक्खर या हैदराबाद में, उनको तो बहुत ही जरूरत है. ये आपको आइडेंटिफाई, who needs you more? This is this segment here. Then what is the market size? Market segment बढ़ रहा है कि shrink कर रहा है? क्यों बढ़ रहा है? फिर ये आपकी पोजीशनिंग क्या होगी, आपके कैसे लगेंगे अपने कंपटीशन के साथ. आप सबसे महंगे हैं, सबसे सस्ते हैं, सबसे खूबसूरत हैं, सबसे क्या हैं, लोग कैसे आपको याद करें रखेंगे. और ये है कि आप पैसे, आपके यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, CAC, which is customer acquisition cost, क्या है, आपने सोचा है उसके बारे में? कभी सोचा ही नहीं. ग्रोस प्रॉफिट क्या है, कभी सोचा है उसके बारे में? तो ये 4 सवाल अगर आप जवाब दे सकें, तो ये इस तरह की 4 डायग्राम्स अगर आप ड्रॉ कर सकें, फिर समझेंगे लोगों को, अच्छा भाई, अच्छा इसका ये बिजनेसमैन है ना, इसने तो सोचा हुआ है, इसको आइडिया है, इसको पैसे देने में मैं डरूंगा नहीं. तो ये बात होती है कि इन्वेस्टमेंट रेडीनेस इज ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग ए बिजनेस प्लान व्हिच पुट्स ऑल पीसेस ऑफ बिजनेस टुगेदर. उनको इन्वेस्टर वांट टू सी कि आपके जहन में ये सब रूबिक्स क्यूब जरा कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ. So this is what you have to do. Now I have all kinds of presentations showing you how to do this, what not to do. I can tell you a little bit more, then I can take questions depending on how much time Anwar gives us. आपको मैं एग्जांपल दे रहा था कि जो कंपनी भी होती है ना, वो पैसे जो रेस करते हैं वो चंक्स में करते हैं. ठीक है ना. ये कंपनी का नाम है HubSpot, मार्केटिंग ऑटोमेशन की बड़ी कंपनी है. उन्होंने कैसे किया, शुरू में उन्होंने छोटा सा सीड राउंड किया, फिर इन्वेस्टर के पास गए. यहाँ 2007 में उन्होंने $5.6 मिलियन रेज किए, फिर उन्होंने 12 मिलियन किए, फिर 16 मिलियन, फिर 21 मिलियन, तो बाद में IPO हुआ और 143 मिलियन रेज किए. एवरी टाइम द वैल्यूएशन केप्ट राइजिंग. तो कंपनी की वैल्यू आपने बढ़ा दी है, फिर आप रेज कर रहे हैं. तो आप एवरी टाइम इन द बिगिनिंग दे गिव half that investor, then investor took some more money, then more money, then आखिर में जो फाउंडर थे उनका छोटा सा हिस्सा था, लेकिन कंपनी की वैल्यू देखे ना 700 मिलियन. तो ऐसे होता है कि एज ए you raise money, you're selling the shares of the company. Investors are buying the shares of the company. आपका शेयर श्रिंक होता है, एज आप शेयर, आपके जितने हिस्से होते हैं वो तो उतने ही रहते हैं, लेकिन और क्योंकि आप बेचते रहते हैं, आपका श्रिंक होता रहता है. लेकिन if company is successful, it all works out. तो ये मैं जो बात कर रहा हूँ उसकी तस्वीर ऐसी है कि शुरू में आप जब कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो जो सबज है ना शेयर, ये अपने आपने कंपनी से खरीदे हैं. ठीक है ना. आप तो ये हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, कंपनी इधर है. कंपनी इज डिफरेंट देन यू. आपका नाम है, कंपनी का अपना नाम है, आपका टैक्स आईडी है, कंपनी का भी टैक्स आईडी है. कंपनी डूब सकती है, आप ना डूबे. आप मर सकते हैं, कंपनी जिंदा रह सकती है. तो ये सेपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप ये करते हैं, आप कंपनी में आप कहते हैं कि मैं तो अपने आइडिया और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डाल रहा हूँ और मैं कुछ पैसे भी दे रहा हूँ, कंपनी मुझे शेयर्स बेचेगी. ये ग्रीन जो शेयर्स हैं, आप कंपनी से शेयर्स खरीदते हैं, बहुत ही सस्ते खरीदते हैं, 2 पैसे के, आधे टके के, लेकिन आपने शेयर खरीद दिए. ये दीज आर टिपिकल नंबर्स, 3 मिलियन. तो आप थोड़े से शेयर्स एलोकेट कर देते हैं कि मैंने लोगों को हायर करना, उनको भी मैं इशू करूंगा. तो देखें टोटल आपके 4 मिलियन शेयर इसमें आपने स्टार्ट किए. फिर जब इन्वेस्टर आएंगे थोड़ी देर के बाद, आप इन्वेस्टर को मजीद शेयर बेचने शुरू कर देंगे. अब आपके पास ये थे, इन्वेस्टर आए, आपने जो ब्लू में है, यू सेल देम अ शेयर होपफुली एट अ हायर प्राइस. आप उनको शेयर बेचते हैं, उनको पैसे देते हैं, उन पैसों से आप फिर कंपनी चलाते हो. फिर कुछ अर्से के बाद कोई और इन्वेस्टर जरूरत होती है, यू फाइंड सम न्यू इन्वेस्टर, सीरीज बी इन्वेस्टर, उनको फिर आप शेयर बेचते हैं होपफुली एट अ हायर प्राइस. जैसे दिखाया था HubSpot का, they kept selling shares to other investors at higher and higher price. So this is how you raise money from investors, by showing them and issuing them shares. Let me pause here. कोई burning question अगर है तो मैं उसका जवाब दे सकूं, क्योंकि मैं I'm going to change the topic. ये एक क्वेश्चन ये जो आप कह रहे हैं, जो बिजनेस प्लान है, उसके अंदर व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो इन्वेस्टर जो है जिसको वो देखता है? उसका जवाब जनाब ये है
ये जवाब है। ये 10 सवालों का जवाब आप दे सके ना ऐसे फटाफट फटाफट, उसको देखता है। उसके अंदर भी अगर देखें आप तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर अ लार्ज एंड ग्रोइंग मार्केट, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 बात है कि जो लोग जो काम आपके को फाउंडर्स हैं, ये डू दे हैव द हेड पुट टुगेदर स्ट्रेट, डू दे कैन दे वर्क टुगेदर, उनकी डीप एक्सपर्टीज है, उनका कस्टमर नॉलेज है, अंडरस्टैंड करते हैं कि लोग क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो वंस यू गेट अ सेंस कि इस बंदे ये बंदा माकूल है, इसके पास कोई को फाउंडर्स भी हैं, ये अंडरस्टैंड के प्रॉब्लम क्या है, इसने कोई ट्रैक्शन भी कर ली है, मार्केट भी बढ़ी है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एवरीथिंग एल्स कम्स नंबर 2। थैंक यू। सूफी साहब बंद, हाथ नीचे। इरफान साहब सवाल। सर अर्थ सर ये है कि जब हम लेवल 8 सीरीज में पहुंचते हैं तो हम कितनी इक्विटी ऑफर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर को? अगर आप इक्विटी ऑफर नहीं करते, आप ऑफर ये करते हैं कि भाई मुझे इतने पैसों की जरूरत है, वो आपको कहते हैं यार इतनी पैसे मैं देने को तैयार हूं, लेकिन उसके लिए मैं इतनी कंपनी की ओनरशिप आता हूं, फिर उससे नेगोशिएट करते हैं। यू ओनली थिंग यू नो इज हाउ मच मनी यू नीड। वो इन्वेस्टर कहते हैं कि इस कंपनी की वैल्यू कितनी है। अब मैं डॉलरों की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ। इस कंपनी की वैल्यू अगर 5 मिलियन है, आपको 1 मिलियन चाहिए, तो वो बताएंगे अगर कंपनी की वैल्यू 5 मिलियन है, आप 1 मिलियन देंगे उनके पास। देखिए ना उनकी, इट्स बेटर इन द नेक्स्ट स्लाइड, कि अगर कंपनी की वैल्यू उन्होंने की है लेट्स से $10 मिलियन, आपके 4 मिलियन शेयर्स थे, तो प्राइस पर शेयर होगी कितनी? 10 मिलियन डिवाइड बाय 4 मिलियन शेयर्स, $2.5 पर शेयर। अगर वो लोग ये लोग लेट्स से $2 मिलियन आपको इन्वेस्ट कर रहे थे, उनको शेयर बेचेंगे आप $2.5 पर शेयर का, तो न्यू शेयर्स आप उनको इशू करेंगे कितने होंगे? दैट विल बी 2 डिवाइड बाय 2.5। $2 मिलियन डाल रहे हैं, एक शेयर की प्राइस है $2.5, तो आप इनको कितने शेयर इशू करेंगे? 8 लाख। तो इस तरह से होता है, यू कंप्यूट ए शेयर प्राइस, उनके इतने शेयर्स बेचते हैं नहीं थे। आप नहीं कहते कि मैं आपका 10% कंपनी बेचूंगा, शायद पाकिस्तान में कहते होंगे लेकिन अमेरिका में नहीं कहते। आप वैल्यू कंपनी की वैल्यू डिटरमिन करते हैं, उसको एग्री करते हैं, उससे प्राइस पर शेयर कंप्यूट करते हैं, उसके हिसाब से जितने पैसे डाल रहे हैं उतने शेयर उनको इशू करते हैं। अब्दुल्ला जी, अस्सलाम वालेकुम। नईम साहब, आपने जैसे भी जिक्र किया कि अमूमन जैसे जैसे शेयर बेचते जाते हैं और रेस करते जाते हैं कैपिटल, वैसे वैसे फाउंडर्स की अपनी डाइल्यूशन होती जाती है। तो हाउ फ्रीक्वेंट और इनफ्रीक्वेंट इज दिस के वो अपने आप को डाइल्यूट ना करें, बल्कि न्यू एडिशनल शेयर्स बेचते रहें, इंक्रीज कर ले कैपिटल ये बेस ऑफ द कंपनी इटसेल्फ रादर देन सेलिंग देयर ओन शेयर्स। ऐसे ही करते हैं। देखिए ना, अब शुरू में हमारे पास 4 मिलियन शेयर थे, फाउंडर के कितने थे? 75%। उन्होंने ये शेयर बेचे, फिर उन्होंने मजीद शेयर बेचे, अब ये बढ़ने के टोटल शेयर हो गए 10 मिलियन। They own 3 out of 10. So 75% है, now they're diluted to 33%. ऐसे ही होता है, हम नए शेयर बना के बेचते हैं, उनका परसेंट ओनरशिप डाइल्यूट होता रहता है। ओके, आई गॉट इट, थैंक यू। जब 75% ओनरशिप थी, कंपनी का शेयर प्राइस थी $1, अब शेयर की प्राइस हो गई है $200। बिल्कुल ठीक, यही बात होती है। थैंक यू। अब्दुल्ला जल्दी। Sure, sir. Thank you very much for the opportunity to ask questions. कहानी करो ना, लंबी लंबी बातें करो, फटाफट सवाल करो। Okay. सर, मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी हमारी कंपनी है, फर्स्ट इट स्टार्टेड एज अ सर्विस बेस्ड बिजनेस, लेकिन हमने फिर बाद में अपने भी प्रोडक्ट्स बनाए ना, अल्हम्दुलिल्लाह दैट प्रोडक्ट्स आर आल्सो डूइंग वेल। सो अभी मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि जो भी हम इन्वेस्टर लेट से हमारे कंपनी में आगे आता है, सो विल ही हैव शेयर्स ओवर द प्रोडक्ट्स एज वेल, या नहीं वो हमारे सिर्फ सर्विस बेस्ड जो मेन बिजनेस है उसमें ही हमारे साथ एज अ पार्टनर आएंगे, और विल इट गो एज अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव फॉर द इन्वेस्टर्स के उन्होंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स में भी हाथ डाला है, प्रोडक्ट्स को भी अब आगे लेके चल रहे हैं, या नहीं वी शुड जस्ट प्रेजेंट अवर मेन स्टार्टअप और उसी में इन्वेस्टर को लेंगे? शॉर्ट आंसर, मेन स्टार्टअप। जैसे एक ही बर्तन है यार, बर्तन उसमें पहले हल्दी डाली थी, फिर वो मिर्च डाली, हल्दी में तो आपका आधा आधा है लेकिन मिर्चों में नहीं हो सकता यार। एक ही हांडी है, एक हांडी बना रहे हो, एक हांडी बेच रहे हो,
It's just about the company. हांडी के अंदर क्या है? That's your problem. An investor will only invest. उसको उसका रेसिपी पसंद आई है सारी मिलजुल के. Okay, sir. Okay, thank you. तो यही ना कि आपके जब there are different sources of revenue too. शुरू में आपको सिर्फ भाई, दोस्त, माँ लोग पैसे देंगे मोहब्बत की वजह से, उनको आपकी और समझ नहीं आती. बाद में एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं. एंजल इन्वेस्टर होते हैं जो अमीर लोग, जो सेठ साहब या कोई बोर्ड अमीर लोग, जैसे अनवर की तरह अमीर भी है, बोर्ड भी है. अब क्या करेगा अपने पैसों के साथ, समझ नहीं आ रही. तो कहेगा हाँ यार ये तो बड़ा अच्छा है, ये नए एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं. So they were doing something. I understand. I like what they do. So they're willing to invest some money, partly to give back, partly to make some money, partly to learn about something new. This is their motivation. Then venture capitalists होते हैं, लेकिन वो तो काफी देर से आते हैं, जब कंपनी के चालू हो चुकी हो. लेकिन ना शुरू में आपका आइडिया कि ऐसे हम कुछ चीज चलाएंगे. वेंचर कैपिटल यूजुअली कम जब चीज चलनी शुरू हो जाती है, उसको स्पीड अप करने के लिए. सो पाकिस्तान में है कुछ वेंचर कैपिटल, अमेरिका में ज्यादा है. तो दे कम लेटर, दे हैव डिफरेंट मोटिवेशन कि कंपनी में ट्रैक्शन है, लोग बाकी ले रहे हैं. कंपनी के हमारे पैसे निकलेंगे कैसे, कंपनी का एग्जिट कैसे होगा, कोई खरीदेगा इस कंपनी को, या ये पब्लिक आईपीओ जिसके शेयर फ्लोट करेंगे. तो जब तक उनको समझ नहीं आई वो फिर नहीं इन्वेस्ट करते. तो लेट स्टेज होते हैं. स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर होती हैं अपनी कंपनियां. वो कंपनियां, उनके पास पैसे होते हैं, बड़ी कंपनी के पास, वो चाहते हैं कि हम मजीद रेलेवेंट में मजीद पैसे बनाएं, अपनी मार्केट को खुला करें, तो वो भी इन्वेस्ट करते हैं. सब कंपनी लाइक गूगल, इंटेल, ट्विटर, फेसबुक, शेवरॉन, सिटी बैंक, दे ऑल हैव वेंचर ग्रुप. स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर कहते हैं उनको. सो चक्कर ये है कि जैसे आप अपना आइडिया से शुरू करते हैं, फिर कोई कंपनी प्रोटोटाइप होता है, फिर प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, फिर लोगों को बेचना शुरू कर देते हैं, फिर स्केलिंग होती है. तो आप you raise money to get to the next stage. Raise money, get to the next stage. आप सारे पैसे शुरू में क्यों ना खोल लें. या चक्कर ये शुरू में खोल लोगे, आपकी कंपनी की वैल्यू बहुत कम है. चलें आपको चाहिए $10 लाख. आपकी कंपनी की वैल्यू शुरू में क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी. अगर आप बेच दें तो इन्वेस्टर विल टेक 90%, you will have very little left. तो क्या फायदा हुआ उसका. So you want to raise just enough money to come to the next stage, then raise the next stage, then next stage. So इस तरह से करके you preserve your ownership in the company. So that's why you go to different stages based on कितने पैसे आप were trying to raise. So ये, I mean, I can share this slide with you because I'm going fast. आपके पास शायद लिखने का वक्त ना हो. तो पॉइंट ये है कि आप इन्वेस्टर रेडी कब होते हैं. And answer is कि अगर आप ये 6 चीजें आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दें, तब आप इन्वेस्टर रेडी समझे जाते हैं. ये चीजें क्या हैं कि you have discovered a white space. यानी कि कोई ऐसी यहाँ कोई कर नहीं रहा जी. लेकिन जी करीम तो थी, लेकिन हम खवातीन है पर्दे वाली, वो नहीं चाहती करीम में जाने के लिए. अगर ऐसी कोई सर्विस हो सिर्फ खवातीन के लिए हो और वो भी पर्दादार हो, उसके डार्क उसके हों, फिर हम इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स अ वाइट स्पेस. कोई सर्व नहीं कर रहा. अच्छा, ये है कि आपने लोगों से बात कर लिया कि वाकई वो कंफर्टेबल है ऊबर या करीम देने के लिए. अगर ऐसा होता है कोई खवातीन वाला रिक्शा या ऊबर उसे ले लेंगे, आपने कंफर्म कर लिया तो ठीक है. आपके पास बंदे भी हैं जो उन्होंने ऐसा दे नो दिस बिजनेस. तो एक को सॉफ्टवेयर आती है, एक ने कोई बनाई हुई है ऐसी चीजें, एक वो टैक्सी ड्राइवर वाला भी है. तो यू हैव अ टीम व्हिच अंडरस्टैंड द डायनामिक्स. फिर आपके पास फाइनेंशियल मॉडल है कि कितने पैसे की जरूरत है, कहाँ तक ले जाएगा, आप कितने बड़े हो सकोगे. फिर उन सब नंबर 1 2 3 4 को इकट्ठे करके आपने कहानी बना दी कि मैं खड़ा हुआ था, मेरी बहन को तो रिक्शा नहीं मिल रहा था, फिर ये हुआ, फिर हुआ, हमने समझा कि ऐसी जरूरत है, हमने टेस्ट किया, हमने 125 सवारियां मुकम्मल कर ली हैं. लोग बल्कि हम डबल उसका फेयर चार्ज करते हैं, लोग फिर भी देने को तैयार हैं. आप देख लें, ये बिजनेस मॉडल है. तो ये कहानी अगर आप कर सकते हैं विद सम प्रूफ पॉइंट एंड ए कंपेयरिंग स्टोरी, नाउ यू आर इन्वेस्टर रेडी. वैसे अनवर यार, ये आइडिया तो मुझे भी लगता है कि मैंने एग्जांपल दिया, इट्स कुड बी अ रियल बिजनेस हियर. माजरत के साथ ये मेरे पास भी मौजूद है. हाँ बिल्कुल, ये अजहर साहब ने भी, अजहर साहब ने भी ये मुझे, जब मैं कराची में था तो इसी आइडिया के बारे में बात की थी जो बात कर रहे हैं. मेरे पास पूरी उसकी प्रेजेंटेशन मौजूद है और मॉडल भी मौजूद है, गाड़ी भी मौजूद है, 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक. एनीवे, चले प्लीज कंटिन्यू. तो पॉइंट इज कि आप इन्वेस्टर आपकी कैसी होती है.
And उसकी वजह यह है कि आप बेसिकली यू वांट रिसर्च कि कौन लोग हैं, किस में इन्वेस्ट करते हैं, अगर किसी से इंट्रोडक्शन करा दें, क्योंकि इन्वेस्टरों के पास काम क्योंकि लूले पंजे आते रहते हैं कि जी मुझे पैसे दे दें, ये में करना है, वो तंग आ चुके होते हैं। लेकिन कोई साहब उनको, शासन साहब उनको इंट्रोड्यूस करें, अनवर साहब इंट्रोड्यूस करें, तो वो सुनेंगे, कम से कम कहानी सुन लेंगे। सो यू वांट टू गेट एन इंट्रोडक्शन, फिर यूजुअली यू सेंड देम ए 1 पेज एग्जीक्यूटिव समरी। 1 पेज एग्जीक्यूटिव समरी सारी कहानी नहीं सुनाती, it only answers the first 5 questions. Are you investment worthy? अब तो वजह होती है कि भाई आके मुझसे बाकी कहानी से आप मुझे मुलाकात करें, फिर सुने। जो मुलाकात करेंगे तो आप उनको इम्प्रेस करेंगे अपनी विजडम से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी कमिटमेंट से, ये सारी होती है। जैसे आपकी ये दैट्स द फेस टू फेस मीटिंग, फेस टू फेस मीटिंग उसका ये होता है कि फेस टू फेस में वो इंट्रीग हो जाए, उनको समझ कि ये बंदा सही है, पैसे बनने के चांसेस हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो मुलाकातें होंगी, कई मुलाकातें होंगी, चाय पाएं, खाने पे जाएं, आना पीछा, ताकि कंफर्टेबल हो जाएं। जस्ट लाइक आप शादी की बात होती है, एकदम से शादी तो नहीं होती है एक हफ्ते में। अगर एक हफ्ते में हो जाए तो कुछ चीजें खराब है, कुछ चक्कर है, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता आना जाना, मिलना जुलाना, ऐसा ही होता है इन्वेस्टर के साथ। जब वो कंफर्टेबल हो जाते हैं तो फिर आप उनसे होते हैं कि भैया वक्त आ गया है, कंपनी की जरूरत है, आप इतने पैसे मुझे चाहिए, इतना तक आप कैसे आप डिपॉजिट कराएंगे। सो दिस इज अ होल प्रोसेस। ये प्रोसेस में कुछ महीने लगते हैं, ये 1-2 दिन में नहीं होता। सो दैट्स व्हाई आपको पहले होमवर्क करना पड़ेगा, उसमें आपको कुछ वक्त लगेगा। होमवर्क हो गया, आपने वो 10 सवालों का जवाब तैयार कर लिया, फिर आप स्टार्ट पिचिंग, प्रेजेंटिंग, मीटिंग, रिक्वेस्ट करते हैं। फिर अगर वो उनसे आपको पसंद आ गया तो देयर इज सम टर्म शीट इज गिवन। टर्म शीट इज अ प्रपोजल टू इन्वेस्ट। उसमें लिखा होगा कि कभी कितने पैसे देने को तैयार हैं, हमें उसके में क्या चाहिए, कंपनी की ओनरशिप कितनी होगी, और हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रिप्रेजेंटेशन होगी। तो उसके बाद लीगल प्रोसेस होता है, उसके बाद क्लोजिंग में पैसे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। तो मैंने में और अनवर ने भी कई दफा लाखों डॉलर हमने रेज किए हैं इसी तरीके से। सो तरीका इज प्रूवन। So this is why you have to do your homework first. You have to answer those 10 questions जो मैंने आपसे जिक्र किया था, तब आप जाने को तैयार होते हो। लेकिन मुझे पता है, आप मैंने हजारों पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर से बात की है, वो पूरा सोचने से पहले, पूरे जवाब देने से पहले एकदम से एक टांग पे खड़े हो जाते हैं कि जी ये है मेरे पास, ले लें, बस बड़ा है। Nobody will chase you up. आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी क्रेडिबिलिटी इस्तेमाल करनी पड़ती है, आपकी आंसर दोस क्वेश्चन। सो दैट्स व्हाई यू डोंट वांट टू बी सीक्रेटिव। ये जी वो मैं उनको क्या बता दूं, वो तो भाग जाएंगे लेके मेरा आइडिया। यार उनके अपने भी तरीके हैं, उनके अपनी जिंदगी में कॉम्प्लिकेशन है, आपके वो चुराने के लिए नहीं बैठे हुए। Most investors have other problems in life. They're not looking to start a company. Plus, it's so much hard work. They don't want to do the hard work. And then you're vague. You just जो सवाल करता हूँ उसका गोल मोल जवाब देते हैं। पाकिस्तान में बहुत मशहूरी है इसकी, गोल मोल। फिर और just boring, लंबी कहानी ये वो। So the point is you have to really connect with people. आप समझे, मैं पोटेंशियल दामाद के लिए मिलने जा रहा हूँ, सास से कैसी बात करेंगे, वही तरीके इस्तेमाल करें तो आपका वक्त बहुत अच्छा होगा। जब सास से पास जाते हैं, बड़ी शराफत से बैठते हैं, फटाफट छोटे छोटे जवाब देते हैं, जूती उतार के वो मोहलत उतार के भी नहीं बैठते, माकूल बैठते हैं। ऐसे काम करना है। So think of this way. That will serve you very well. अच्छा, Anwar, I have a lot more details. I want to time check with you and stop. And yeah, I think let's take a 15-20 minutes more if that's okay with the rest of the people. So yeah, please cover the main things. No problem. Yeah. Even half an hour is no problem. Very interesting. ये कौन बोल रहा है यार, ना का आपका शक्ल आती है, बुरके में बैठे हुए हो, ना मुखड़ा दिखा रहे हो, बुरका जी, बुरका देखिए ना, कभी कभी शक्ल anyway शक्ल ना दिखाओ, नाम तो बताओ, कौन सा बोल रहे हैं। इसे लगता है आवाज आ रही है कहीं, बात कर रहा हूँ, किसी से आवाज आ रही है, कोई बंदा बैठा हुआ है। तस्वीर भी आ गई खाली, मेरे ख्याल में आ गई होगी तस्वीर मेरी। आपने अजहर को कैमरा खोलने पे मजबूर कर दिया। नहीं लोग हमें वो बुरके में बैठे होते हैं, सारा दिन बातें कर रहे हैं, ना समझ रहे किस बुरके से बात आ रही है। बहरहाल तो वेरी इंटरेस्टिंग नईम साहब, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चलें, प्लीज कंटिन्यू। या तो पॉइंट ये है कि अगर आपने वाकई इन्वेस्टर को अप्रोच करना है, स्पेशली सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर, आपके पास ये 5 चीजें की तैयारी करनी होती है।
पहले ही आपने उसको अप्रोच कैसे करना है, ईमेल में या क्या 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 कैसे कम्युनिकेट करना है, फिर एक 1 पेजर एग्जीक्यूटिव समरी जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कम्युनिकेट करने हैं, फिर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वो कोई 10-15 या मैक्सिमम 20 स्लाइड की, कवरिंग दो सेम 10 क्वेश्चन आई टोल्ड यू अर्लियर, द सेम 10 क्वेश्चन। फिर आपने कोई मॉडलिंग की है, फाइनेंशियल मॉडल आपके की कैसे नंबर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वगैरह, एंड आइडियली यह पे आइस ब्रेकर उससे बातचीत करने के स्टार्ट करने के लिए कि जी आप भी कसूर से हैं, हम भी सियालकोट से हैं जी, हमको देखें हम तो अच्छा आप भी इस समझ लिए, तो थोड़ी कोई होना चाहिए ऐसे आइस ब्रेकर ताकि आपके कनेक्शन पैदा हो जाए। अच्छा, उसमें एलिवेटर पिच होती है। एलिवेटर पिच है कि आपने हाउ कैन यू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, आप करते क्या हो। अब ये कह सकते हैं जी जे के अच्छे इमरान हसन साहब की बात कर रहा हूँ, वो कहेंगे जी ये हम डेयरी है, गायें हैं, उनको हम देते हैं फीड, लेकिन सब जो इस्तेमाल होती है फीड वो आ रही है ओवरसीज। अब डॉलर इतना महंगा हो गया है, वो फीड बहुत महंगी हो गई है, हमारी कमजोर हो गई है हमारी गायें, तो हमने लोकली प्रोड्यूस की है सेम इंग्रेडिएंट, उसकी प्राइस तकरीबन 1-3 गुना कम है, तो हम आपकी गायें जो हैं वो मोटी हो जाएंगी। हमने टेस्ट किया यहाँ 50 गांव में, और 6 महीने के अंदर अंदर उसका रिजल्ट है। तो दिस इज की 30 सेकंड वर्जन ऑफ एलिवेटर पिच। तो इसमें कि अगर मेरा जो कंपनी थी लास्ट टेलीसेंस, उसकी 10 सेकंड की पिच थी कि अनाज एग्रीकल्चर में अनाज अगर आप स्टोर करें उसकी क्वालिटी कभी इंप्रूव नहीं होती, लेकिन आपके पास आपने स्टोर किया हुआ है 10 गोदामों में, आप चाहते हैं कि किस गोदाम को पहले बेचूं, कौन सा खराब होने वाला है। दिस इज माई 10 सेकंड वर्जन। 30 सेकंड वर्जन होगा भाई आपके पास अनाज आपने स्टोर किया हुआ है, यूजिंग वायरलेस सेंसर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वी कैन प्रिडिक्ट कि कौन सा गोदाम पहले खराब होने वाला है, इसमें खराबी उसको किसको पहले बेचना है। तो आई एम टॉकिंग हाउ वी डू इट, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया। ये सिक होती है, छोटी जवाब राइट ऑन द मनी। अभी हमारे पास और टाइम होता मैं आपको इंटरोगेट करता अपना एग्जीक्यूटिव। मैंने आज तक कोई एलिवेटर पिच नहीं की जो मुझे पसंद आई हो, तो मैं आपकी फाइन ट्यून कर सकता हूँ, लेकिन बाद में करेंगे। फिर एग्जीक्यूटिव समरी इज ए 1 पेजर जस्ट टू गेट देयर अटेंशन, फिर आपकी पिच डेक है। अच्छा, अब यही है कि लोग जो इन्वेस्टर होते हैं, दे वांट टू somebody else to tell them यार बात माकूल है, बात कर लो। That's how they filter out, तो 50 लोग उनको मजीद खामखा में तंग करने के लिए तैयार होते हैं। So you may need to connect people on LinkedIn, you may need to meet them at some event जहाँ लोग गैदर हो रहे होते हैं, तो यहाँ you meet people। अगर ईमेल भी भेजनी होती है तो मैं ऐसी ईमेल भेजता हूँ। इसमें जरा गौर करें कि ईमेल में क्या खसूसियत क्या है। इसमें 3-4 खसूसियत हैं जो आपको ऑब्वियस नहीं होंगी। पहली खसूसियत ये है कि I'm right away, इस बंदे को लिख रहा हूँ, मेरा पहला सब लफ्ज है somebody who introduced me। अब आपका दोस्त है जी शकील साहब, अब आपने ईमेल आई है, पहला लफ्ज शकील है, तो आपने उसको कहें भैया शकील क्या बकवास कर रहा है, मैं पढ़ूं तो सही। फिर उसके पहले सफे में पहली लाइन में मैंने बता दिया कि मैं क्या कर रहा हूं, दूसरी लाइन में बता दिया कि मार्केट साइज क्या है। यानी कि लंबी कहानी नहीं यार, एक सवाल में एक लफ्ज में फटाफट बता दिया क्या है। दूसरे में मैंने बताया कि वी ऑलरेडी हैव ट्रैक्शन। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट के इट इस टीम हैज क्रेडिबिलिटी, हम कोई बोंगे नहीं है। एंड दिस इज माय आस्क, मैं आपसे क्या चाहता हूं। फिर आखिर में नाम भी बताया, फोन भी दिया है, लिंक्डइन का कनेक्शन भी दिया है, यानी उसको कोई क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है कहीं ढूंढने की, सब चीजें जो है उसको मुझे टेस्ट करना है वहीं दे दी है, ताकि आसान से एक क्लिक में वो समझ जाए कि बंदा कौन है, माकूल बंदा कि नहीं है। सो इस केयरफुली रिटन ईमेल इज वेरी टाइट। You know the kind of email I get from people? Subject line is hello। फिर कहता है कि मैं 27 साल का एक नौजवान बंदा हूं, मैं सिंध में रह रहा हूं, मेरी स्कूलिंग यहाँ से हुई है, मैं ऑलरेडी बोर्ड हो गया यार, ना बंदे को जानता हूं मैं, ये लंबी कहानी सुना रहा है, मैं क्या करूं उसको। So I don't read the rest of the email। So there's an art to writing a compelling email to the point। Here, what is executive summary? Executive summary basically answers some question, but even could be less question। This is एक पैराग्राफ है यार, एक सवाल में आपने उसको फिट करना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या थी, क्या अनमेट नीड थी, किसको प्रॉब्लम थी,
What's wrong with the current alternative? तो वही अगर हमें एग्जांपल जो मैं दे रहा था कुछ अर्से पहले कि just like लोगों को जान टैक्सी की जरूरत प्रॉब्लम होती है, खवातीन को भी होती है. Sometimes they are not comfortable sitting in a stranger's car, so that's the problem. Our current alternative is Careem and Uber. That's difficult because of the reason we said. हमारा solution है सिर्फ खवातीन के लिए driven गाड़ी होगी. Business model I charge twice as much as Careem. So who really needs it? So ये चीजों का हमने किया है. इसको आप गूगल कर सकते हैं कि what's an example of good executive summary. All kinds of things come up. You don't have to guess. लोगों ने बताया हुआ आपको एग्जांपल दिया हुआ है. ये मेरा एक एग्जांपल है. एक कंपनी थी, ये वन पेजर है. ये टॉप ऑफ द पेज है. दिस इज द सेकंड बॉटम ऑफ द पेज. देखो एक तो चीजें नाइसली की हैं. आई कैन डायरेक्टली गो कभी क्या टॉपिक है. फिर पहली लास्ट में बताता है कि ऑर्गेनाइज अ बायोटेक कंपनी टेस्ट आर चेंजिंग द वे किडनी डिजीजेस आर डायग्नोस्ड. मतलब कि अगर किडनी का ऑपरेशन करना है, बॉडी किडनी को रिजेक्ट ना कर देगी या नहीं कर देगी, उसका टेस्ट है. तो बताया आपको इतने मिलियन पेशेंट्स हैं, इतनी किडनी ट्रांसप्लांट हैं, इसकी 2 प्रोडक्ट्स होंगे, ये पीसीआर टेस्ट है. यानी कि साफ साफ आसानी से बता दिया कि भी क्या हो रहा है. फिर ऑन द बॉटम ऑफ द पेज बता रहा है आपको या कितने हमने पैसे रेज कर लिए हैं. फाउंडर में 3 खवातीन हैं, तीनों डॉक्टर हैं. डॉक्टर ईशा अब्दुल्ला, उन्होंने एक क्रेडिबिलिटी है टीम की. ये एक सिंपल वन पेजर, उनसे उन्होंने $15 लाख रेज किए थे और 2 साल के बाद कंपनी बिक गई थी $30 मिलियन की. So it's not complicated, it's not fancy, there's no fancy picture. It's to the point and succinct. That's the point. This is another example. Some bullets, some highlight, कोई market size, एक तस्वीर, some basic information. This executive summary raised $6 million. तो ये है कि आपने एग्जेक्टिव समरी पे ये भी कहूंगा कि I think it's okay to take help from ChatGPT as well. You can feed them because sometimes it's hard to articulate. Some people, they are not very good in articulating things. You feed all the information and ask ChatGPT, it will articulate. And determine the size as well. iPad. ChatGPT को यूज करते हुए आप जो है बहुत आसानी से अपना मैसेज आर्टिकुलेट कर सकते हैं, ये वन पेजर के लिए और इवन प्रेजेंटेशंस के लिए वगैरह वगैरह. So basically आपको मेंटली आपको होना चाहिए आप आपस में कि कौन से सवाल इन्वेस्टर पूछेंगे, उनका जवाब मैं कैसे दूंगा. तो सिर्फ मैंने अब तक 28 सवाल देखे हैं. कोई 29वां सवाल नहीं देगा अभी तक. वो जो 28 सवाल लोग पूछते हैं ना, मैं आपको दे रहा हूँ. तो जाने से पहले इसको चेक कर लो कि जवाब अगर ये पूछेंगे मैं क्या कहूंगा. ये पहले 9, ये दूसरे 9, ये आखिरी 10. तो इनको अगर आप प्रैक्टिस कर लें इसका जवाब कैसे दूंगा. अब ये नोटिस करेंगे जवाब 24 से 28 तक जवाब है वो ब्लू कलर में है, ब्लैक में नहीं है. इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ये आखिरी जो सवाल हैं ये ट्रिक क्वेश्चंस हैं. These are not normal questions. ये आपको ट्रिक क्वेश्चन है ताकि आपको जवाब कैसे देंगे, उसे पता लगा बंदे के जहन में वाकई है क्या, दिल में क्या है, उसके लिए. तो ये ट्रिक क्वेश्चन. So I'm happy to answer any of these 28 क्वेश्चन आपके लिए. लेकिन अगर आप इस 28 का जवाब दे दें तो फिर आप तैयार होंगे. तो आपको मैं इसके लिए दे रहा हूँ. जी सर इसमें एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 24th वाला. सर ये मेरे से एक दफा हो भी चुका है ना, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कुड आंसर दिस क्वेश्चन के ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस बेहतर तरीके से हम इसको आंसर कर सकते हैं. वेरी सूटेबल क्वेश्चन. उसका आंसर ये होता है यार, देखो दे आर टेस्टिंग यू कि आप वैसे ईगो ड्रिवन है, सेठ साहब हैं कि नहीं तो हमेशा सही रहूंगा, बल्कि अपने बच्चे को दूंगा ये कंपनी बना के. और आर यू सेइंग अच्छा आप ले लें कोई और बना दे. इसका मतलब यू हैव नो कन्विक्शन. बोथ आर नेगेटिव. आपका जवाब ये होगा, देखें जी फिलहाल एट दिस मोमेंट आई एम द बेस्ट पर्सन टू लीड द कंपनी. मेरा आइडिया तो मेरा था, मैंने टीम असेंबल की है, मुझे कस्टमर से सैकड़ों कस्टमर बात कर, मुझे क्लैरिटी है. Bringing somebody else right now will be disrupt, may even kill the company.
आई एम द बेस्ट पर्सन विद द कंपनी। लेकिन एक वक्त आएगा, पता नहीं 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में, जब कंपनी बढ़ जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी, आई विल बी द फर्स्ट वन टू लुक फॉर द राइट पर्सन हु हैज द स्किल्स टू टेक द कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल। At that time, I will still be in the company, but I will be a different role. लेकिन अभी तो वक्त है ना, कंपनी को बढ़ाया जाए, वहां तक लेकर जाया जाए। And I'm the most suitable person right now. तो आप फिक्र मत करें, मैं कुर्सी के लिए नहीं बैठा हुआ पाकिस्तानी सियासतदान की तरह। कुर्सी किसी भी हो जाए, कंपनी जरा चढ़े। तो ऐसा जवाब दें, जरा नुआंस जवाब, तो लगता माकूल जवाब है, पर तरीका बंदा यानी कि सेंसिबली थिंकिंग, ऐसा जवाब देंगे। Amazing, sir. Thank you very much for addressing. सॉरी, जस्ट वांटेड टू ऐड वन थिंग, ये खाली जवाब नहीं है, ये सचमुच में आपका बिलीफ होना चाहिए। मतलब ये नहीं आप खाली मेकअप आंसर्स नहीं दे रहे हैं कि अपनी तरफ से आपने एक जवाब जो उनको अच्छा लगे तो वो आपने दे दिया। नहीं, यू शुड नो दिस कि अगर आप एक कंपनी बना रहे हैं, अभी तो आप सही पर्सन हैं, लेकिन डाउन द रोड कंपनी बड़ी हो जाएगी और आपके पास उसका तजर्बा नहीं होगा, उसको आगे नहीं ले जा पाएंगे आप, एंड दैट वुड बी द राइट टाइम फॉर यू टू फाइंड समबडी हु कैन। तो ये अगर आप इस पे बिलीव नहीं करते हैं, खाली जवाब दे रहे हैं, तो ये सही नहीं है। या ओके, मेरा एक सवाल था छोटा सा। अगर आपकी भी आइडिया स्टेज पे कंपनी हो और अब आप बूटस्ट्रैप पे प्री-सीड करने जा रहे हैं फॉर $100,000, इफ इट साउंड्स सेफ, तो आपकी सीलिंग या फ्लोर कैसे डिटरमाइंड होता है? आपकी वैल्यूएशन उस वक्त कैसे डिटरमाइंड होती है, क्योंकि आपके पास कोई ट्रैक्शन तो होती नहीं है। अच्छा, तो दिस इज इन ये, तो यू रेजिंग मनी फ्रॉम होम एंड यूजिंग व्हाट मेथड? So we've been out with different VCs. हम लोगों ने सेफ का बोला था उनको। They normally ask for उस वक्त आपकी evaluation क्या है, and that is one of the most confusing part, क्योंकि मैं अपनी forecasting पे उनको बता रहा होता हूँ और वो उस वक्त बहुत difference हो जाता है। So let's talk about that. I'm trying to find a good place to write some stuff. Maybe I'll do it here. अच्छा, तो जब let's talk about this. So ये होता है कि जब देखिए ना, there are two ways to raise money. One is called a price round, when somebody puts a value in the company and computes a price per share. ये तरीका नंबर 1। लेकिन somebody has to figure out कि कंपनी की वर्थ क्या है। कंपनी worth $1 million, $10 million, $50 million. Venture capital list have resources to come up with a potential valuation of the company. आम जो होता है investor, they don't have the techniques to figure out, so they raise money using a second method. Second method is called a note. Note meaning a loan. कि देखो आपसे मैं लोन ले रहा हूं, and जब सब वेंचर कैपिटलिस्ट उसको कंप्यूट करेगा प्राइस, तो ये लोन कन्वर्ट हो जाएगा into shares. It's called a convertible note. Convertible note is not like a normal loan. It will expect it to convert into say. फिर किसी लोगों ने कहा जी जो लोन मैं नहीं लेना चाह रहा, ये शरिया कंप्लाइंट नहीं है, ये है वो है, चलो जी, तो उन्होंने इन्वेंट किया something called SAFE. SAFE stands for Simple Agreement Future Equity. Yes. For future equity. It's not a loan. It doesn't have interest. But आपको पैसे में ले रहा हूँ, but it will convert for sure into shares if some conditions happen, like investors come in or they don't come in, then at some price. अच्छा, सेफ में आपने सिर्फ 2 चीजें डिटरमिन करनी होती हैं, डिस्काउंट एंड कैप। ये 2 चीजें आप निगोशिएट करने हैं, और लंबी को निगोशिएट है ही नहीं। डिस्काउंट का क्या मतलब? डिस्काउंट का मतलब है, देखिए मैं यार बात सुनो ना मेरी, आप अपनी बातें करते मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनना कि नहीं, जवाब के नहीं। अच्छा, मैं कहानी सुना रहा हूँ, आपको सुना जरा। अच्छा, व्हाट इज डिस्काउंट, व्हाट इज सेफ? अभी आप कह रहे हैं कि मैं पैसे आप डाल रहा हूँ, आप इन्वेस्टर से पैसे अगले साल लोगे, तो मैं तो ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ, मुझसे अभी ले रहा हूँ, तो मुझे क्या फायदा? अगर मैं अब डाल दूं 1 साल के बाद आप इन्वेस्टर रेस करेंगे, तो मेरे ये $1 पर शेयर पे कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे को फायदा दो। उसका फायदा होता है कि चल ठीक है, आप ये करें, आप अभी डाल दें, जो भी इन्वेस्टर पैसे देंगे आपके हम डिस्काउंट रेट पे हो जाएगा। अगर उन्होंने $1 पर शेयर लेना है, आपके जो पैसे होंगे वो 80 सेंट पर शेयर पे कन्वर्ट होंगे, तो आपको ज्यादा शेयर मिल जाएंगे। So that's called a discount.
and typical number used is 20%. Now it's going to take longer than 1 year, could be 25 or 30%. It's going to take just एक महीने में काम होने वाला है, could be 10% or 0%. But typically expectation है कि अगले 6 से 12 महीने में आप पैसे रेस करेंगे तो ये 20% is the discount. Second is cap. Cap is something which you don't offer. Cap is something investor may insist. Cap का मतलब ये होता है कि अगर अभी I don't know जब कोई बंदा वैल्यूएशन डालेगा तो क्या वैल्यू करेगा 5 मिलियन पे 10 मिलियन पे 50 मिलियन पे, लेकिन ऐसा ना हो कि कंपनी की वैल्यू इतनी बढ़ जाए जो मैं पैसे दे रहा हूँ उसको मुझे बहुत छोटा हिस्सा मिलेगा. आई वांट टू मेक को मुझे बहुत छोटा ना मिले तो माकूल हिस्सा तो मिल जाए. तो मैं कहता हूँ चलें जी, व्हाट्स माकूल राइट नाउ, दैट इज माय मैक्सिमम कैप, द मैक्सिमम वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी जिसमें मेरे पैसे कन्वर्ट होंगे. सो इसमें खास तौर पे मैं ऐड करूंगा क्योंकि अगर मैं इन्वेस्टर हूं, आई एम टेकिंग मच हायर रिस्क देन इन्वेस्टर कमिंग इन 1 year later or 6 months later. So that's why I would like to be equally rewarded for the higher risk I'm taking. So that's why I would ask for a cap rather than basically I'm rewarded the same way and some investor come in 6 months later or then 1 year later where the risk could be much lesser. So that's the view I would have as an investor in my mind. And आपकी बात सही है. This is people don't know what should be the cap. देखें अमेरिका में होता है जब आप पैसे रेस करते हैं, typical it's not uncommon to have a valuation of 3 million, 5 million, 8 million, 10 million for the initial round. There are always exceptions on both sides. So cap is what is reasonable. तो आमतौर पे अभी मैंने इन्वेस्ट किए हैं एक इलेक्ट्रिक एयरप्लेन कंपनी में, तो हमारी कैप थी 5 मिलियन. I'm hoping they will raise money at higher than that, but मेरी प्राइस जो होगी, प्राइस per share will be computed based on that 5 million cap. लेकिन I've seen 2 million, 3 million, 10 million. तो आपने सोचना अगर कंपनी का मैं प्राइस राउंड करने को तैयार था, what number will I be happy with? That becomes the cap. So if I'll be happy with 3 million, या उससे थोड़ा सा कम कर सकते हैं, then I'll give them a cap of 2.5 million. I can show the whole mathematical calculation cap कैसे compute होती है, लेकिन this is the short answer. Short answer is, what is the number, if there was a price down, at what valuation you say ये मुनासिब है, उसको cap बना दो. That's बात खत्म. So समद आपका क्या question था specifically? सर दोनों ही यही क्वेश्चन था. आई थिंक इट्स बीन वेरी क्लियर. इसके साथ एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि इफ इट्स 5 million which you have cap decided और अनफॉर्चुनेटली आप नेक्स्ट राउंड में 4 million रेज करते हो, then what happened? Very good question. So answer is, as an investor, you have to choose. या आप कैप को एक्सेप्ट करोगे या आप 20% डिस्काउंट को एक्सेप्ट करोगे, आपके लिए जो भी ज्यादा फायदेमंद हो. You don't get both. अगर 4 मिलियन पे रेस कर रहे हो, then as an investor, I'll take the whatever price per share is, and I will convert at 20% discount. आपको चूज करना पड़ता है, या नमक पारा लोगे या बालूशाही, दोनों नहीं खा सकते. Okay, I understand that. Great. अच्छा, we can stop here, or I can flip through some kind of a typical investor presentation, wherever you want. So let me ask, and I think we can go for another 13 minutes if there is no major question, concern raised. Seems like people are still sticking around and finding this thing valuable. So let's take another 30 minutes and we'll stop at the 9:30 sharp. Yeah, so मैं 9:30 तो 12 मिनट. हाँ 12 मिनट बस. ठीक है, तो मैं what I'll do is I'll do slide for 5 minutes and then I can do question and answer. लेकिन slide, because I'll share the slide with you, so because I'm going fast. अनवर तो आराम से जाता है ना, मैं तो तेज गाऊं. अच्छा, अब ये आपकी सारी कहानी जनाब एक सवाल एक स्लाइड में है. जैसे ना सब जो होती हैं देसी मूवीज, उनकी एक ही कहानी होती है. लड़का लड़की मिल गए, लड़की को पसंद नहीं आया लड़का, उसने बड़ी बदमाशियां की, फिर कुछ तरह किए, फिर गाने शाने गाए, फिर उसको पसंद आ गई, फिर सब बात नहीं हुई. इट्स द सेम स्टोरी एवरी टाइम. यही कहानी सुनानी होती है कि वी सॉ अ प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ अ यूनिक बैकग्राउंड वी सॉ कि भाई ये ठीक हो सकता है. फिर हमने मार्केट रिसर्च की, लोगों से बात की, हमने वैलिडेट किया हाँ सही था. फिर हमने असेंबल कर ली एक टीम, सब जो सही होनहार लोग थे. हमने वी नो आवर कस्टमर, वी नो व्हाट दे वांट, वी हैव टॉक्ड टू देम एंड वी अंडरस्टैंड द कंपटीशन. सब चीजें तैयार हैं.
आपसे सिर्फ हमें ये चाहिए कुछ पैसे ताकि हम इस स्टेज से इस स्टेज पे चले जाएं। दैट्स द होल कहानी। ये कहानी बताई जाती है on one slide executive summary और एक 10-15 slide presentation। ये कहानी आपने सुनानी, ये सारी कहानी बस इसमें है। ट्विटर ने ये कहानी बनाई, फेसबुक ने ये कहानी सुनाई, गूगल ने ये कहानी सुनाई, एप्पल ने ये कहानी सुनाई, आप भी ये कहानी सुनाएंगे। तो ये इसके है 10 chapters। ये 10 chapters is what you need to be able to communicate। Each chapter could be 1 slide, 2 slide or 3 slide। What was the pain? You know, who has this problem? What's this alternative? What's the solution? How do you do it? Who's in the team? Are they qualified? क्या confirm है कि लोग वाकई चाहते भी हैं कि नहीं, इसको चाहते हैं कि नहीं? Traction, go to market plan में price क्या है, कहाँ बेचना है, कितने का बेचना है, क्या partnership होंगी? That's number 6। Market size, if everybody could buy, does buy, कितने पैसे सालाना तैयार होंगे? That's the total available market। That's the only thing to compute। Don't compute SAMs and SOM, that's really silly। Just total available market। That's the only thing you should compute। Then what is the competition? हम उनसे बेहतर कैसे हैं? Number 8। फिर financial, unit economics, yearly projection, what's the typical deal? That will help them understand। And number 10, हम कितने पैसे रेज कर रहे हैं और कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। ऐसे नहीं कहना जी हाँ कितने पैसे रेज करें जी, ये 10 लाख। क्यों? That's good for a year। यार good for a year क्या मतलब हुआ? एक साल के बाद आपने 10 लाख सर्च भी कर दिए, प्रोडक्ट में नहीं, कस्बे नहीं ना, तो आप तो बहुत डूबने वाले लगते हैं, बहुत रिस्की लगते हैं। तो बताना पड़ेगा कि कहाँ तक पहुंचे। अगर आपने सुनना है, दिस इज ए गुड टॉक, टेड टॉक बाय डेविड रोज, 14 मिनट की है। इसमें बताता है आपको हाउ टू प्रेजेंट टू वीसी। सो जो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छा लगा, गोरे से सुन लेना, वही बात करेगा वैसे, तो आपको ज्यादा यकीन आ जाएगा कि गोरे ने भी वही बात की है। सर आप गोरे से ज्यादा अच्छे हैं, छोड़े गोरे को अभी आप भी अच्छा, तो वही बात कर दी कि आप ईमेल देखो या व्हाट्सएप भेजो पाकिस्तान में, देखो इंटरेस्ट भी है कि नहीं है, गेट रेफरल, एग्जीक्यूटिव समरी, फेस टू फेस मीटिंग। तो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन आप इन्वेस्टर से पूछना चाहेंगे कि आपका कितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, टिपिकली कितने करते हैं आपके। ये दिस इज वेंचर कैपिटल की है, एंजल इन्वेस्ट के नहीं है सवाल। अच्छा, आदिल अब्बास सवाल आप करना चाहते हैं, जल्दी से करो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर काइंडली कंफर्म कर दें आवाज आ रही है ताकि मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूं। आवाज नहीं आ रही तो मैं आपकी बात क्यों नहीं सुन रहा हूँ? आपको आवाज आ रही है? ये सवाल क्योंकि सवाल है, मत क्या करोगे, सवाल आ रही है कि नहीं आ रही है, सवाल क्या करो कर रहा था। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि अब हमारा अगला स्टेप था कि ये सुनना, और इसमें लिखा हुआ था कि प्रोवाइड समरी वगैरह, तो उसके लिए अब टेम्पलेट वगैरह कुछ प्रोवाइड किया जाएगा हमें? यार टेम्पलेट तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप इतना भी नहीं करने को तैयार कि गूगल करो, एग्जाम्पल 5 देखो, खुद लिखो। मुझे कहते तख्ती में मुझे ट्रेस कर देना, मैं तख्ती में ऊपर लिख लूंगा। यार हद हो गई, कोई टांग हिलाओ, काम करो, खुद डिस्कवर करो, देने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन आपका क्या फायदा? फिर तस्वीर में आप ट्रेस करते रहोगे सारी जिंदगी। ऑलरेडी किया हुआ है बीआईसी में, हमने ना ये सारा कुछ करके दिया हुआ हमारे पास है, लेकिन वो फिर भी एक होता है ना कि बेटे आपने ये लेके चलना है, ये इस फॉर्मेट को फॉलो करना है, तो इसलिए बस कंफर्मेशन के लिए पूछना था, वरना इशू नहीं है कोई। Yes, the answer is you will provide a template, but however, I think the point and Naeem is making is, I think we need to some of you guys already do that thing. Whenever you have a question, it's a good practice to Google, number one, and then also important how you ask the question is very important. But also now is a very good practice to chat GPT as well. You get a lot better answer and a lot more well put together response to chat GPT. So I encourage everybody to have that habit, literally habit, to do so. So let's look at a typical presentation, because I want to finish in the next few minutes so we can answer more questions. This is the slide all of you will skip. जल्दी में, हाँ जी हमारी कंपनी का नाम है रतन वाला। अच्छा ठीक है यार, this is the most important slide in the whole slide deck. I call it slide 0. इसमें कंपनी का नाम भी है और कोई एक टैग लाइन है कंपनी करती है। इसमें आप सारी कहानी सुनाएंगे कि भाई क्या है, करती क्या है कंपनी, क्यों आप मेरी बात सुनने में अगले 10 मिनट के लिए। So this is where you give your 10-second or 30-second elevator pitch.
So this is when you trying to open the right compartment of their brain where the words will go in. अगर वो कंपार्टमेंट नहीं खुलेगा तो सारे सवाल आप जो कहेंगे लफ्ज उनके ऊपर से जा रहे हैं, कहीं दिमाग के अंदर सेटल नहीं हो रहे. So you have to say, who are you? Why are you here? It's like an executive summary verbally. अच्छा, फिर बताओगे कि आप कौन हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, आप रेलेवेंट हैं, who's in the team. तो अगर आप you have a credible team कि हम जी एंग्रो में काम करते थे 6 साल पहले, मेरा जो को-फाउंडर है इसने एक सॉफ्टवेयर कंपनी पहले चलाई थी, we are solving this problem. अच्छा, तो इसमें कोई डेप्थ है टीम में तो मैं सुनने को तैयार हूँ. फिर हमने क्या प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की है, कैसे की है, क्या उसमें यूज केस बताओ कि जी ये टिपिकली ऐसे लोग होते हैं, ये प्रॉब्लम होती है, मशीनें आपके पास होती हैं, अचानक मशीन रुक जाती है, तो समझ यह है कि क्यों रुक गई, फिर सारा प्लांट शट करना पड़ता है कि वो मशीन को ठीक करवाने के मिस्त्री बुलवाना है. What if there was a way to predict कि कौन सी मशीन कितने दिनों में खराब होने वाली है ऑटोमेटिकली, ताकि अभी इसके मेंटेनेंस अरेंज कर दें, तो अच्छा नहीं होगा. ये प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की. Then who needs and more? सब मशीनें, well we have identified कि सब मशीनों की जरूरत होती है, लेकिन मशीनें जो कि रोटेट करती हैं, गरारी होती है, उसमें ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है. तो उसमें हमने आइडेंटिफाई किया है, तो उसकी मार्केट कितनी बड़ी है, कितनी सच कंपनियां हैं पाकिस्तान में, कितने लोग तैयार हैं, उनको की जरूरत है, फिर उनके ऑल्टरनेटिव क्या हैं. अभी जो इन्हें चपरासी रखा होता है वो रात को सुनता है कि आवाज की गरारी की आवाज आने आती है, फिर आपको कहता है मालिक साहब जी ये मशीन में अजीब अजीब कर रही थी. दैट्स नॉट एफिशिएंट मेथड. चपरासी रात को सो सकता है, आवाज गलत नहीं हो सकती. व्हाट इफ वी हैड वायरलेस सेंसर्स who can listen to those गरारी की आवाज, ऑटोमेटिकली फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म करके आइडेंटिफाई कर दे मार्केट गैप. तो हमने उस तरीके से कर सकते हैं. तो देखें, मैंने सोल्यूशन से स्टार्ट नहीं किया, मैंने स्टार्ट किया प्रॉब्लम क्या थी, किसको थी, उसमें कमी बेशी किया उसकी सोल्यूशन में, क्यों नहीं वो खुश नहीं है, फिर बात की है कि मेरे सोल्यूशन क्या है. मोस्ट पीपल स्टार्ट बाय सोल्यूशन. जी मुझे देखें मैं इतना खूबसूरत हूँ यार, उसकी बात में बात आएगी, पता तो सही प्रॉब्लम क्या है, किसको प्रॉब्लम है पहले. सो यू हैव टू लीड अप टू द सोल्यूशन. जब सोल्यूशन फिर बात करोगे, फिर दिखाओगे कि हमारा यूनिक टेक्नोलॉजी क्या है, हमारा अप्रोच क्या है, हमारी कोई खास रिलेशनशिप क्या है, हम क्यों सक्सेसफुल हो सकते हैं इसमें. फिर बताएंगे उसकी अल्टरनेटिव से हम बेहतर कैसे हैं. We are most integrated, we are the less expensive, we are more, have already worked with the following system, whatever जो भी है. फिर बताएं कि हम पैसे कैसे बनाते हैं, लोग हमें कितना देते हैं, हमारी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कैसी है, हम बेचते हैं, सब्सक्रिप्शन है, वन टाइम सेल है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, क्या है. सो इस तरह की चीजें हम आपको आउटलाइन करते हैं. फिर बताते हैं कि हम किस मार्केट सेगमेंट में जा रहे हैं, किसको हमारी ज्यादा जरूरत है, कौन सी हमें पार्टनरशिप की जरूरत है, हमारे पहले 10 कस्टमर कैसे मिलेंगे हमें. फिर बताएंगे हमारी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन कैसी है, कितनी बड़ी कंपनी हो सकती है, स्प्रेडशीट दिखाएंगे हमारी 5 साल की प्रोजेक्शन, 3 साल की प्रोजेक्शन वगैरह वगैरह. फिर बताएंगे हमने क्या प्रोग्रेस कर ली अब तक और क्या प्रोग्रेस करने वाले हैं. पिछले 6 महीने में हमने ये कर लिया है और अगले 18 महीने में ये होने वाला है. एक पिक्चर लाइक दिस. ये पिक्चर नीचे बताती है आपको कितनी कंपनी के एम्प्लॉय काउंट कितना बढ़ रहा है, बताता है कि कितने पैसों की जरूरत होगी, ये बताता है कि कितने पार्ट हमारी क्या माइलस्टोन आने वाले हैं. इनको समझ आ जाती है बड़ा सवाल कि क्या करना चाह रहे हैं, आपकी क्लैरिटी है जहन में आगे करना क्या है. फिर बताएंगे कि हमारे रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, हमने उनके बारे में सोचा है, हमारा सोचा है कि उनको कैसे मिटिगेट करेंगे रिस्क को, कि अगर डॉलर गिर गया 500 हो गया फिर हम क्या करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे. फिर हमसे आपकी क्या जरूरत है, कंपनी को किस स्टेज से किस स्टेज तक ले जा सकते हैं. दिस इज द 12th चैप्टर. दिस इज इट. दी आपको 12 स्लाइड दिखाई हैं. दैट इज बेसिकली द होल पिक्चर. So, excellent. This is basically, I think this is the end, because आप ये सब जो बता रहे हैं ना, इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि भाई पैसे बनने वाले हैं भी कि नहीं, यहाँ इन लोगों के पास माकूल हैं बैकग्राउंड, मुझे पैसे बनाएंगे और कितने. So everything in their mind is converting into पैसे बनने के चांस है कि नहीं. तो ये समरी है कि बेसिकली आप ये करना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टर की इमेजिनेशन में आप वो इमेजिन कर लें कि वाकई अगर होगी मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, फायदा होगा लोगों को, पैसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे. फिर अब नंबर 2
कि मेरे पास इंसाइट्स हैं, मेरे पास ट्रेनिंग है, मेरे पास क्लैरिटी है कि कैसे मैं मार्केट कैप्चर करूंगा। और थर्ड थिंग कि आपके एग्जैक्टली 3-4 चीजें जो करनी है मुझे पता है, सिर्फ पैसों की जरूरत है, बाकी सब चीजें मेरे पास तैयार हैं। तो ऐसे अगर आप कहानी आप बनाएं, ये कहानी सेल्स, कहानी रेजेस मनी, इट्स ऑल अबाउट द कहानी। Anwar Khan, back to you. Thank you, Naeem. I assume that you will make this deck available so we can provide that thing because it does have a lot of good guidelines. ये इमरान साहब अपना हाथ उठा रहे हैं वैसे। ठीक है। So do I get your answer yes, Naeem, before I move? बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है, इंशाल्लाह। इमरान, please go aheड। सर मेरा सवाल ये है कि मैं अभी इन्वेस्टर पिच कर रहा हूँ, तो इन्वेस्टर ने कहा कि आप किसी आइडिएशन स्टेज में ही डेयरी टेक का जो आइडिया है आप सेल कर दें, आप कोई काम नहीं करेंगे। मुझे इस पे आगे क्योंकि क्या करना चाहिए सर? समझ नहीं आई। सर मैं इन्वेस्टर पिच कर रहा था डेयरी टेक की, तो इन्वेस्टर ने कहा कि आप ये आइडिया जो है ये सेल कर दें और आप इससे आउट हो जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो क्या कहे, भाग जाओ उस्ताद यहाँ से, डंडा मार दो। लीव द इन्वेस्टर। तो लड़की कहती है कि मैं आपकी शादी करने को तैयार हूँ, उसके बाद आप घर से निकाल दूंगी और आप भाग जाएं, तो फिर क्या कहोगे? क्या जवाब दोगे उस लड़की को? ठीक है सर, बिल्कुल सही है। आई थिंक यहाँ पे Naeem, this happens a lot more often. I've heard some other stories as well. A business partner said that I'll take 80% of your company just to partner with you. Yeah. So it's like all sort of different things. So you just say no, basically, typically. Just say no. Exactly. Next question. Any other question? I think this is good. Excellent. So I think now we can end right on 9:30. So Anwar, I'm going to send the PDF to you, then you can share it because I don't know how to share it. Exactly right. Send me the PowerPoint as well, so I can take out some, make it smaller, relevant, and then share the PDF with them. Yes. Abdullah. Yes, Abdullah. सर मेरा बेसिकली क्वेश्चन नहीं है, लास्ट में बस एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ कि सर नईम सर के साथ मैंने पहले भी एक मतलब इनका सेशन अटेंड किया था, आई गेस इट वाज इंटरनेशनल आइडिया बैंक और सम काइंड ऑफ दैट इवेंट। उसमें उन्होंने रिश्ता एनालॉजी वाली ये बात पहले ही की थी, एंड ट्रस्ट मी इसने मेरी लाइफ में मेरे एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में जितनी हेल्प की है आई कांट एक्सप्लेन इट। और आज फिर मज़ीद जितना इनसे सीखने का मौका मिला है, इट वाज truly valuable, and this 1.5 hours that I spent, it was been valuable for me. Excellent. That's why we have Naeem on the call. Inshallah, and you will see him a lot more often as well in future, and many other as well. So with that, thank you for joining, and I hope you guys learned. And it's not only just hearing this session, but also remembering it. Practicing is also important. That's the whole purpose. Objective is this session, and we spending time is not to just take your time. Objective is to put you guys on a successful path which has a higher probability to succeed. And that's only possible that you guys learn and practice. So with that said, thanks again, Naeem, and other people who joined. Appreciate that thing. Thank you very much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Walaikum salam.